Good evening, students. Welcome to Real Academy. So today what we are going to do is a very basic thing. Okay. This in chemistry is one of the basic and the most, I think, the important thing that we have to study. It starts from right where you started studying chemistry and it goes all the way till the time when you will keep on studying chemistry. Okay. So एक ऐसा ये topic है balancing the chemical equations. So one of the most easy topics I would say, but still little bit tricky, needs a lot of practice. बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एक ऐसा चीज है जो हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए बिकॉज ये एक बेसिक फंडामेंटल थिंग है केमिस्ट्री की ओके सो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन होता क्या है एंड हमको ये क्यों करना है केमिस्ट्री में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्या जरूरत है हमको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस की क्यों एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ केमिकल इक्वेशन इज ओके सो एक केमिकल इक्वेशन जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है इक्वेशन मतलब क्या होता है इक्वेशन मतलब देयर विल बी यू कैन से अ टर्म गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक बीच में एक इक्वल टू साइन होगा एंड देन देयर विल बी अ राइट हैंड साइड सो इक्वेशन बेसिकली बनता है जस्ट अ सेकेंड सो एक इक्वेशन बनता है कोई टर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड पे एंड दिस टर्म शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि the terms on the left hand side and the terms on the right hand side are equal, then I can say that it's a equation. Okay. If they are not equal, then I say that it's an inequation. Okay. So वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ रिएक्टेंट्स जो हम रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा इफ आई कंबाइन 2 3 4 मल्टीपल रिएक्टेंट्स and they combine together and they give me product. So how do I write that? Okay. So to represent a chemical equation, how do I represent a chemical equation? So the reactants are always written on the left hand side. So reactants हम left hand side में लिखते हैं. Then I give an arrow. This arrow is equivalent to an equal to sign जो हम मैथ्स में लिखते हैं. Okay. It is an equivalent to equal to. Okay. So यहाँ पे हमने लेफ्ट में लिखे हैं reactants. ये reactants अब react करेंगे and then ये convert हो जाएंगे products में. So यहाँ पे ये बन जाएंगे products. So now this is a chemical equation. Now when do I call it a chemical equation? जब chemical equation इनको कब बोलूंगा मैं chemical equation इनको तब बोलूंगा जब reactants के side पे the amount of chemicals that are on the left hand side, that is on the reactant side, will be equal to the number of chemicals that are on the right hand side, जो product के side पे. So in this case, जितने chemicals रिएक्टेंट के साइड है उतने ही केमिकल्स होने चाहिए प्रोडक्ट के साइड पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिएक्शन में समझो यहां पे लिए हैं कार्बन सो से देयर आर 4 कार्बन सो अगर रिएक्टेंट के साइड पे 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट के साइड भी 4 कार्बन होने चाहिए ओके ओनली देन आई कैन से दैट द केमिकल्स आर बैलेंस्ड और द केमिकल equation is balanced okay so this is how I represent a chemical equation where I write reactants on the left hand side product on the right hand side and this arrow represents an equal to sign. So this is a chemical equation. Now I cannot say that the chemical equation is balanced or not. Okay. When will it be balanced? It will be balanced when all the elements in the chemical reaction, taking part in the chemical reaction would be equal. जितने elements reactant के side है, अगर उतने ही elements product के side में होंगे, तो I can say that the chemical equation is balanced. Okay. So that is what a balancing a chemical equation is. Now why it is important to balance the chemical equation? अभी ये तो समझ गया कि balancing होता क्या है. Okay, कि एक chemical equation दिया होगा जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए अगर ये मैंने कर दिया मतलब मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं ऐसे ही अगर मैंने लिख के अगर इफ आई लीव इट व्हाट हैपेंस क्या मैं गलत हूं क्या मैं सही है सो दैट वील अंडरस्टैंड फ्रॉम अ लॉ ओके सो आई ड्रॉप दिस पार्ट okay so there is a law called as the law of conservation of mass. So the law is something like law of conservation of mass. Now what does the law suggest? Okay, ये क्या law? What does the law state? So law states that अगर कोई भी mass जो है वो create हुआ है ओके द मास जो भी फॉर्म हुआ है ये हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ओके सो मास जो है सो मास कैन
neither be created created, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, अ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम थिन एयर आई कैन नॉट गेट अ पेंसिल. ओके, दैट इज व्हाट मैजिशियंस डू, ये हम नहीं कर सकते. ओके, सो पेन आई कैन नॉट गेट इट फ्रॉम एयर, एयर से मैं पेन में कन्वर्ट नहीं कर सकता. ओके, सो आई नीड रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल से ही मैं पेन बना सकता हूं, मैं हवा से पेन नहीं बना सकता. ओके, सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ओके, नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, सो अगर हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्टेंट के साइड में ले लिए 10 कार्बन एंड मेरे प्रोडक्ट के साइड में मैंने लिख दिए 5 कार्बन. द केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. बट यहां पर क्या किया है मैंने 10 कार्बन का मास जो इनिशियली था मैंने प्रोडक्ट के साइड पे सिर्फ 5 कार्बन लिखे हैं. इसका मतलब मैंने 5 वेट और 5 कार्बन को डिस्ट्रॉय कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल. हम मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग और क्रिएटिंग मास, विच इज सिंपली नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू एब्सोल्युटली बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया होगा तो हमको उसको बैलेंस करना ही होता है. ओके, सो अब हमको ये पता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस क्यों करना है. ओके, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बैलेंस इट. इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस देयर आर वेरियस मेथड्स to solve a balanced chemical equation. There is trial and hit method. Okay, there is numerical solving method. Method तो बहुत सारे हैं, but which method to follow? Okay, so there is a simple trick to follow कि chemical equation को balance कैसे करते हैं. So what is the trick? So वो एक step by step मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि how do I balance a chemical equation. Okay, so let's go step by step. So the first step to balance a chemical equation is what? See this. So step 1. So in step 1, we'll always try to balance elements which are not oxygen and hydrogen. So if in a chemical reaction there are hydrogen and oxygen, we'll not balance them. We'll balance all the other elements except hydrogen and oxygen. So the step 1 would be to balance chemical equations. You have to balance a chemical equation. First, balance all elements except hydrogen and oxygen. So this is your step 1. So step 1 में हमको क्या करना है? We have to balance a chemical equation. We have to balance all the elements. जब तक हमारे बाकी के elements balance नहीं हुए हैं, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है. We have to first balance the elements which are not oxygen and hydrogen. So बाकी के elements balance करने हैं. We have to balance the other elements. We have to leave hydrogen, oxygen. Hydrogen and oxygen we don't need to balance first. We have to balance the other elements except hydrogen and oxygen. Okay, तो ये हो गया हमारा step 1. Okay, now step 2. Once you have balanced all the other elements, then step 2 में हम balance करेंगे. Step 2 में we'll try to balance hydrogen. So step 2 में after balancing all the other elements, we'll balance hydrogen. We'll try to balance hydrogen. Okay, now if the first 2 steps you have performed perfectly, okay, without any error. So again, अगर hydrogen balance हो गया, तो in short, in the step 3, oxygen automatically gets balanced. Oxygen अपने आप वो chemical equation में balance हो जाएगा. मतलब step 3 में
So step 3 में then we balance the oxygen. So after hydrogen, then we balance oxygen. So these are some of the steps that if you follow, you will be able to balance a chemical equation very easily. Okay. Now इसमें एक और trick भी है. So एक important point over here. I'll put a note over here. If in a chemical equation अगर hydrogen कहीं पर भी ऑड नंबर में दिखता है, लेकिन जैसे 1 हाइड्रोजन है या 3 है या 5 है, ओके, इफ इन एनी एलिमेंट या इफ इन एनी कंपाउंड अगर वो जो हाइड्रोजन है वो ऑड नंबर में है, सो इफ हाइड्रोजन और यू कैन से ऑक्सीजन एज वेल, ओके, इफ ऑक्सीजन or your hydrogen, okay, I'm just writing for oxygen. So if oxygen in a compound is found to be odd, okay, is found to be in odd number, अगर ये odd number के फॉर्म में है तो सिंपली वो कंपाउंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो सिंपली आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो दैट कंपाउंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. आई शो दिस स्टेप बाय स्टेप कि हम ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो नोट मैंने लिखा है ये हम कब यूज करेंगे, ओके, वील सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड देन यू विल गेट अ क्लियरिटी कि ये केमिकल इक्वेशंस इन्हीं स्टेप से हम कैसे balance करेंगे. So these are some of the steps that we are going to follow. Okay, to balance a chemical equation, first we'll balance all the other elements except hydrogen oxygen. Hydrogen oxygen को हमको balance नहीं करना है. We'll balance other elements first. After that, once you have balanced all the other elements, then we'll balance hydrogen. And once you have balanced hydrogen, we'll go for oxygen. Oxygen will automatically get balanced. Okay. Is this clear? So let us start with some of simple examples to balance a chemical equation so that you get a very clear idea of how we can perform the balancing. Okay. So I have written an example over here. Okay. So यहाँ पे we have got 2 reactants. Okay. So one of the reactant is calcium and another reactant is oxygen. Okay. This is O2 and we get a product as calcium oxide. Now if you look very carefully over here, यहाँ पे left hand side पे there are 2 kinds of elements. One is calcium and another one is oxygen. यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन. So I'll just make a simple line and I'll write the reactants that are present in the chemical equation. Okay. So यहाँ पे calcium present है, so I'll write calcium over here, and there is oxygen present, so I'll write oxygen over here. Okay. So these are the reactants that are present over here. Now the reactants जो यहाँ पे present है वही product के side में होंगे. Okay. So यहाँ पे भी I'll write calcium and यहाँ पे भी I'll write oxygen. Okay. Now the next step. Now the next step is to count how many calcium atoms are there, how many oxygen atoms are there. Okay. So यहाँ पे left hand side पे अगर हम देखें तो calcium there is only one calcium atom. Okay. So I write calcium is equal to 1. So यहाँ पे calcium कितना है, 1 है. Okay. Oxygen I can see that there are O2. So oxygen is 2. Okay. Similarly, on the product side, again there is calcium 1 and oxygen is 1. Okay, यहाँ पे oxygen एक ही है. So now, according to the steps that we are going to follow is, we'll first balance calcium. Okay, we'll not balance oxygen first. We'll balance elements which are not hydrogen and oxygen. So सबसे पहले हम calcium को balance करेंगे. Okay. Now if you look at the left hand side and right hand side, calcium दोनों side पे same है. यहाँ पे भी 1 calcium है, यहाँ पे भी 1 calcium है. So calcium is absolutely balanced. Okay. So now what we have to do? Now what to balance? Okay. Now we'll go for oxygen. Okay. So now while balancing oxygen, you have to be very careful. Okay. Look for oxygen with odd number of atoms. Okay. ऐसा oxygen ढूंढो कि जहां पे odd number of atoms present है. तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब ये इवन पार्ट है. दिस ऑक्सीजन इज इवन. ओके, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, सो दैट मीन्स इट इज इवन. यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑक्सीजन इज ओनली 1. ओके, तो यहाँ पर देयर इज ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे नंबर क्या है, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है. सो व्हाट डिड आई से इन द प्रीवियस स्लाइड कि अगर ऑक्सीजन एक कंपाउंड में ऑड नंबर में है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2. So that is what we are going to do over here. Okay. So I'll
see that यहाँ पे क्या ऑक्सीजन जो है वो ऑड नंबर है, so I'll simply multiply it by 2, so I'll give a 2 over here. Okay, now the equation changes. If you look carefully, यहाँ पे कैल्शियम हो गए हैं 2. Okay, so यहाँ पर I'll write calcium as 2 and oxygen is 2. Okay, so similarly things will change on the left hand side. So अगर यहां पर कैल्शियम 2 हो गया है तो यहां पर भी कैल्शियम आई शुड राइट 2. ओके, सो यहां पर भी अगर कैल्शियम 2 है तो यहां पे आ जाएगा 2 कैल्शियम. ओके, सो यहां पर हो गया 2, ऑक्सीजन इज 2. नाउ द इक्वेशन इज balanced, and this is how you balance a chemical equation. Okay, let us see one more example. So the example I have written over here. Okay, so this is SO2 plus O2 gives you SO3. Okay, again I'll try to balance all the other elements except oxygen and हाइड्रोजन. इफ आई लुक केयरफुली यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, सो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन हम बाद में बैलेंस करेंगे, पहले सल्फर बैलेंस कर देते. तो इफ आई गो फॉर बैलेंसिंग सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पर भी एक सल्फर है. देयर इज ओनली वन सल्फर ओवर हियर and there is one sulfur over here. Now I'll try to balance oxygen. So now while balancing oxygen, again I'll see that if any compound of oxygen, is there any odd number of oxygen present. Okay, so if I look at SO2, there are 2 oxygens. That means यहाँ पर तो कोई odd number नहीं है, यहाँ पे even number of oxygens है. If I go forward, यहाँ पे भी O2 है, so ये भी even number है. If I go to SO3, यहां पर there are 3 oxygens, so that means यहां पर है odd number of oxygen, and जब odd number of oxygen होते हैं तो हम simply यहां पर 2 multiply कर देते हैं. ठीक है, so now the dynamic changes. Let us see what has changed. Okay, so now the sulfur is become 2 and oxygen has become 3 2s are. Okay, you have to multiply this. Okay, 2 into 3, so there are 6 oxygens on this side. Now since there is 2 sulfur over here, I will balance the sulfur first. Okay, so if there are 2 sulfur over here, यहाँ पे आ जाएगा 2SO2. Okay, so यहाँ पर भी sulfur कितने हो गए, 2 हो गए, so 2 sulfurs. Okay, now let us check the oxygens. Okay, so oxygen हो गए 2 2s are 4 and this 2 oxygen, so 4 plus 2 हो गया 6. So that is how you balance a chemical equation. Okay, let us go for some more examples to solve. Okay, so just let me note down an example. Okay, so अगर एक example ऐसे आता है, Zn plus CuSO4. Okay, and on reacting, this will get me ZnSO4 plus Cu. Okay, now again we'll try to follow the same method. We'll first balance all the other elements except hydrogen and oxygen. So यहाँ पर भी hydrogen कहीं पे present नहीं है, तो first we'll balance, I think copper, zinc, sulfur, इनको balance कर लेंगे, and once they are balanced, then we'll go for oxygen. Okay, so let us write what all elements are there. I think there is zinc over here, so there is zinc over here. Then there is copper over here, so अगर यहाँ पे copper है तो यहाँ पर भी copper होगा. After copper there is sulfur, and यहाँ पे भी sulfur होगा. Okay. And after sulfur there is oxygen, so there is oxygen over here. Okay, so let us count the total number of elements that are present. Okay, so यहाँ पे zinc, I think there is only one zinc, there is one copper, there is one sulfur, and there is 4 oxygens. Okay, similarly on the right hand side there is one zinc, there is only one sulfur, there are 4 oxygens, and there is only one copper. If you look carefully, all the elements on the left hand side and all the elements on the right hand side are already being balanced. So this chemical equation does not need balancing. So you can write that the chemical equation is already balanced. This is an already balanced chemical equation. इसको हमें further balance करने की जरूरत नहीं है, because all the elements on the reactant side are very equal to the reactants on the, or the product on the right hand side. Okay. Okay, there is one more example we can try. Okay, like so fourth one. So this is KOH plus I can take H2SO4. Okay,
I'm taking H2SO4. This will get me K2SO4 plus H2O. Okay, so now this equation has hydrogen in it. Okay, so we'll follow again the same steps. First, we'll balance all the other elements, not hydrogen and oxygen. Okay, so let us do that first. So let us divide this into two sections. Okay, so first, यहाँ पे आ गया potassium is K is 1. Then we have sulfur, which is also 1. Okay, so यहाँ पे K1 है, S1 है. यहाँ पे I think K is 2 and S is 1. Okay, so I'm not writing about hydrogen and oxygen yet. I'm first balancing potassium and sulfur. Okay, we'll balance hydrogen and then we'll balance oxygen. Okay, so यहाँ पे, as you can see, potassium is not balanced. So we'll balance potassium first. Okay, so potassium को balance करने के लिए यहाँ पे 2 potassium है, तो यहाँ पे भी I'll put 2. Okay, so now this has become 2 potassium. Okay, so ये हो गया 2 potassium. Sulfur, I think it is already balanced. So we have balanced potassium. We have balanced sulfur. Now, once we have done that, we'll go for hydrogen. Okay, so let's balance hydrogen now. So if you check over here, there are 2 hydrogens over here and there is 2 hydrogens over here. So 2 over here, 2 over here. So total hydrogen count is 4. Okay, so there are total of 4 hydrogens here. Okay, so similarly, let us check how many hydrogens are there on this side. So यहाँ पे I can see that there are only 2 hydrogens over here. Okay, so to balance this, I have to multiply this side by 2 because this is 4. So 2 2s are is 4. So यहाँ पे आ गया 2H2O. Okay, so now I think I have balanced hydrogen. So यहाँ पे ये 2 का हो गया 4. So in this way, I have balanced potassium, sulfur, and hydrogen. Now finally, we can go for oxygen. Let us try to balance oxygen now. So if you look at oxygen, I think there are 2 oxygens over here and 4 oxygens over here. So 4, this 4 and this 2 will get me 6. So these are 6 oxygens over here. Similarly, यहाँ पे there are 4 oxygens and there are 2 oxygens over here. So oxygens हो गए 6. Okay, so this is how you balance a chemical equation. So there is no need to balance oxygen. Oxygen automatically gets balanced if you follow the above steps. Okay. So if I take, say, I'll take another example. So fifth one. So P plus O2 gives you P2O5. Okay, so this is a chemical equation that we are going to balance next. Okay, so now again we'll follow the same steps. I'll divide this into 2 sections. Okay, so let us write the elements that are present. Okay, first I think I'll not write about oxygen. I'll write elements that are not hydrogen and oxygen. So that is phosphorus. Okay, so in this case there is phosphorus over here. So I think there is only 1 phosphorus. So I'll write that as 1 phosphorus over here, and there are 2 phosphorus over there. Okay, so यहाँ पे हो गए 2 phosphorus. Okay, so to balance this, simply what I have to do is I have to multiply this by 2. तो ये अगर 2 हो गया तो मेरा जो इक्वेशन है वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा. So ये 2p हो गया. Okay, so now the phosphorus are balanced. Okay, now let us balance oxygen. Okay, again while balancing oxygen you have to be very carefully balance it. Why? Because you have to check for odd number of oxygens. अगर हम oxygen balance करने जा रहे हैं तो you have to check for the odd number of oxygen. So let us do that. Okay, so यहाँ पे अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है. So ये तो इवन ऑक्सीजन हो गए, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है. अगर हम यहाँ पे देखें, this is O5. O5 means this is odd number of oxygen. Now we have to be very careful. अगर ये odd है तो हम simply यहाँ पे किससे multiply करेंगे? 2 से. We'll simply multiply it by 2. Now this changes the entire equation. Okay, ये सब equation अभी change हो गया. Let's see that what all things have changed. So यहाँ पे हम देखेंगे तो phosphorus हो गया 2 2s are 4 हो गया. तो यहाँ पर ये 2 नहीं है, अब ये 4 हो चुका है. ओके, अगर ये 4 हो चुका है तो लेफ्ट हैंड साइड का फॉस्फोरस भी चेंज करना पड़ेगा हमें. तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 4. दिस ऑल्सो विल बिकम 4. ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस सी द ऑक्सीजन पार्ट. सो फॉस्फोरस तो हो गया 4. यहां पे ऑक्सीजन देयर इज 2 एंड यहां पे ऑक्सीजन देयर इज 5 2s are 10.
सो यहाँ पे 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 एटम है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 10 हो जाएगा। सो दिस विल बी 5O2 एंड दैट इज हाउ यू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। ओके, सो लेट अस गो फॉर अनदर एग्जांपल आई टेक। ओके, सो आई विल ट्राई, just a second. So if I try with 3Fe plus, okay, so Fe plus H2O, this on reacting will get me Fe3O4 plus H2. Okay, so again to balance this we'll follow the same steps that we are going to do. Okay, we'll divide them into 2 sections. ये हो गए मेरे 2 सेक्शन। ओके, इफ आई चेक द एलिमेंट्स, यहाँ पे Fe है तो यहाँ पर भी Fe है। Then there are hydrogen and oxygen that I'll not write right now. I'll first balance this Fe part. Okay, so यहाँ पे if I see the Fe is only 1 और यहाँ पे Fe है 3. Okay, so यहाँ पे there are 3 Fe. Okay, so to balance this it is very simple. I just multiply this by 3. तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया यहाँ पे 3Fe. That's it. So ये पार्ट तो हमारा हो चुका है. Okay, now so the next step to balance hydrogen. Okay, so hydrogen यहाँ पर I think there are 2 hydrogens, so H हो गया 2 और यहाँ पर भी H हो गया 2. So I think hydrogen is already balanced. No need to do anything over here. Now we have to go for oxygen. So now to balance oxygen, again to balance oxygen we have to look for odd number of oxygens first. Okay, जहां पर भी odd number of oxygens है वो हम पहले देखेंगे. Okay, so let us find the odd number of oxygens right now. Okay, so यहाँ पे एक ही oxygen है और यहाँ पे there are 4 oxygens. So I think this is the odd number of oxygen. यहाँ पे कितने oxygen है? There are only 1 oxygen over here. Okay, so this is the odd number of oxygen. Okay, so I just simply multiply this by 2. So अगर है तो I multiply this by 2. Okay, now this changes everything. Okay, so now this has become I think 2 2s are 4 hydrogens. So यहाँ पे हो चुका है 4 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो चुका है तो मुझे यहाँ पर देना होगा 2 हाइड्रोजन। Okay, so this is 2 into 2 that becomes 4. Okay, so I think the hydrogen is balanced. In this case, iron is already balanced. Let us check for oxygen. So oxygen हो गया यहाँ पे 2. You can see there are 2 oxygens and there are 4 oxygens over here. So यहाँ पे there is 4 oxygen. So again to balance oxygen, both are even number. We can simply balance them. इसको सिर्फ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा, this will become plus 2 2s are has become 4H2O. तो ये हो गया मेरा 4H2O. Okay, so oxygen तो हो गया 4 in this case, but hydrogen has changed. Hydrogen हो गया यहाँ पे 4 2s are 8 and यहाँ पे सिर्फ 4 है. So I'll just give a 4 over here. So into 2 किया मैंने वापस तो ये 8 हो गया and this has also become 4 2s are 8 and that is how you balance this chemical equation. Okay, let us go for a last type of sum. Okay, एक और हम last practice करेंगे. So I'll take a little bit difficult one, थोड़ा सा बड़ा वाला हम try करेंगे. So let us say I take say okay, so if I take say C6H12O6 and I'll react it with oxygen. So this is a typical photosynthetic equation. Okay, यहाँ पे ये ग्लूकोज है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आई गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, सो हाउ डू आई बैलेंस दिस? ये इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो द मेथड इज द सेम. हम सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन को. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन है तो यहाँ पर भी देयर विल बी कार्बन. सो अगर यहाँ पे कार्बन 6 है तो यहाँ पर देयर इज ओनली 1 कार्बन. ओके, सो आई नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 6. तो ये हो गया कार्बन बैलेंस्ड. नाउ वंस आई हैव बैलेंस्ड कार्बन, लेट अस गो फॉर हाइड्रोजन. Okay, so if I look at the number of hydrogens on the left hand side, hydrogen are in short 12 over here and यहाँ पे there is only 2 hydrogens. So again to balance this I have to multiply this side by 6. तो ये हो गया 6H2O.
सो मैंने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिए है, सॉरी मैंने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिए है. ओके, नाउ द फाइनल स्टेप टू बैलेंस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले चेक फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो लेट्स चेक ओवर हियर. 6 ये तो इवन है, 2 ये भी इवन है, 6 2s are 12 ऑक्सीजन ये भी इवन है, 6 ऑक्सीजन ये भी इवन है. सो दे आर इक्वल, दे आर, यू कैन से दे आर इवन नंबर. सो हमें इनको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली अपने आप बैलेंस हो जाएंगे. सो लेट्स राइट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन. सो यहां पे ऑक्सीजन हो गए 6 एंड 2. सो यहां पे हो गए 8 ऑक्सीजन इन टोटल. अगर हम ये साइड की बात करें तो ऑक्सीजन है, ये हो गए 12 प्लस 6. So there are a total of 18 oxygens. Okay, so now to balance this we need a total of 10 more oxygens over here. Okay, so 10 कैसे चाहिए देखो, how do I write this 6? तो ये 6 बेसिकली ये ऑक्सीजन में से 6 आ रहे हैं प्लस यहां से 2 ऑक्सीजन और आ रहे हैं. ओके, सो अगर मैं ये साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके, तो ये हो गए 12 प्लस 6. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस एज देयर आर 6 ऑक्सीजन इन ग्लूकोज. तो 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज के थे और जो दूसरा पार्ट था वो O2. तो ये ऑक्सीजन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 18. ओके, सो दैट इज हाउ यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. इफ यू फॉलो द स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है जिसमें हम पहले बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, देन वी बैलेंस हाइड्रोजन, एंड देन व्हेन if we are to balance oxygen we take the odd number first multiplied by 2. okay, so अगर हम ये steps follow करते हैं, so if we follow these steps कोई भी chemical equation आने दो, you'll be able to balance very easily. okay, so I'll repeat it once again how to follow these steps while balancing is. सबसे पहले बाकी के एलिमेंट्स बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने मत जाओ. ओके, फर्स्ट बैलेंस all the other elements, don't balance hydrogen and oxygen. Once you have balanced these elements, go for balancing hydrogen. Okay, once you have balanced hydrogen, come back again. ये step 1 वापस से check करो. Okay, once you have completed step 2, hydrogen balance कर चुके हो, go back again to step 1, check whether the previous elements have become unbalanced, उनको balance कर दो. Once you have done all of this, then check whether oxygen already balanced हो गया है कि नहीं. Oxygen 90% ऑफ द टाइम अपने आप बैलेंस हो जाएगा ये केमिकल इक्वेशन पे. बट अगर नहीं हुआ है, हमको उसको बैलेंस करना है, तो उसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू चेक फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन. अगर कहीं पर ऑड नंबर दिखा, वो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वो जो कंपाउंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन once you have done that you will get all the oxygens in the form of odd number. okay, all the oxygens in form of even number. once you have done that, सारा इक्वेशन विल बी बैलेंस. तो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स कोई भी केमिकल इक्वेशंस यू विल बी वेरी इजीली बी एबल टू बैलेंस. ओके, सो प्रैक्टिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन thoroughly. okay, it's one of the most important things that you need to do. okay, ये जब तक तुम केमिस्ट्री करोगे ये लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा. okay, so balancing easy है, tricky है, it takes a lot of practice, so keep practicing. okay, thank you.